आज हम एक और उदाहरण के माध्यम से संज्ञाओं का भेद समझेंगे। थोड़ी देर चित्त को समाहित कर लेते हैं, 10 मिनट के करीब, एंड देन share the story and then do the analysis.
I'll start the explaining the in brief क्या इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो फिर उसको इस प्रक्रिया से एनालाइज करेंगे। एक बार फिर हमारा एनालिसिस का उद्देश्य क्या है कि हम देख पाए कि उस इवेंट में जो भी इंसिडेंट है, अलग अलग प्लेयर्स का किस तरह का अनुभव रहा, कैसे उनको अलग अलग तरह के अनुभव हुए और उसके पीछे परसेप्शन क्या था और कौन सा डोमिनेंट परसेप्शन। जैसे कल हमने देखा कई बार, क्योंकि सारे इंद्रियों से इनपुट्स आ रही हैं और प्रोमिनेंट भी एक से ज़्यादा हो सकती है। अगर एक से ज़्यादा इनपुट प्रोमिनेंट है तो दोनों के संस्कार, दोनों के जो संज्ञाएं हैं और उसके कारण मोटिवेटेड बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर सेम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यू स्ट्रेट अवे वर्क ऑन इट। बट अगर डिफरेंट आ रहा है, देखने से कुछ लग रहा है, सुनने में कुछ और समझ आ रहा है, तो वन रियली गेट्स इनटू लॉट ऑफ कंफ्यूजन। उस समय हम किस परसेप्शन को चुने, ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जैसे कल भी हमने देखा कि डिसाइपल्स के लिए एक वाणी से, गुरुदेव की वाणी से कुछ इनपुट आ रहा था और एक उनको देख के इनपुट आ रहा था, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो some people followed the voice, some people followed the perception of the eye. And this is a common thing which happens in our day-to-day life, but हम उसको recognize नहीं करते। ये एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस तरह की चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकें और फिर अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन कर सकें। इसलिए मैं समझा रहा था। तो एक इंसिडेंट जो हुआ, it is something which I thought would be good for reflection in another situation. इसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व था, मुझे काफ़ी कुछ याद है लेकिन कुछ चीज़ें एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब जस्ट कल मैं याद कर रहा था तो आई हैड टू फिल इन गैप्स बेस्ड ऑन सम लॉजिक एंड समथिंग। Unfortunately, people who were involved in that, some of them are no more, so I can't confirm. Something in event is about 2000, beginning of 21st century exactly, 2001, 2, 3 or something. इससे पहले हमारे डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा, हमारे आईआईटी में डिपार्टमेंट जो है, ब्लॉक्स ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में बने हुए, एक ये ब्लॉक है उसके पीछे दूसरा, जैसे एक ब्लॉक ये है उसके पीछे दूसरा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक 1 तो बिल्कुल अलग है, जो हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो ब्लॉक 2 में है। ब्लॉक 3 में भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, फिर पीछे डिपार्टमेंट है, जो एनआरसी भी आते रहे उनको मालूम होगा पीछे ब्लॉक 6 में जाके एनआरसी भी, जहाँ पे हम लोग सैटरडेज को मीटिंग किया करते थे। ब्लॉक 2 और 3 के बीच में एक बायोगैस प्लांट बनाया गया था 90s में, और एक प्रोफेसर हमारे बहुत फेमस उसमें काम कर रहे थे। 7-8 साल वो रिसर्च चलती रही, उसके बाद वो खत्म हो गई, तो वो बायोगैस प्लांट बंद हो गया उसको, क्योंकि बायोगैस प्लांट में रेगुलर फीड करना पड़ता है, गोबर को फीड करते हैं, गैस निकालनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। वंस यू स्टॉप डूइंग इट एंड लीव इट एट दैट, जो उसके अंदर पड़ा हुआ पूरा, इट्स अ बिग वन, 20 क्यूबिक फीट, तो ह्यूज स्टफ, उसमें जो भी आपका गोबर और उसको प्रोसेस हो जाता है, केमिकल डाइजेशन हो जाती है, वो सूख गया, धीरे 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 सूख गया। ठीक है, पड़ा हुआ है, उससे कोई स्मेल भी नहीं आती, तो गैस बाहर निकल नहीं रही। तो 2001 या 2 या 3 में वहाँ पे हमारा जो सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट है, उनको एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना था जिसमें बायोगैस की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि पड़ा हुआ है तो अब क्यों अपना बनाए, इसी को यूज़ करके। हमने कहा ठीक है, अब उसको साफ करवाना पड़ा। तो बुलाई गई एजेंसी, उन्होंने पानी वानी डाल के और सारा उसको साफ करके वहीं बाहर जो लॉन है उसमें डाल दिया उसको। और अब तो हाहाकार मच गया उससे, क्योंकि अब वो जो पानी से मिला और बाहर बाहर पड़ा, तो उसकी स्मेल जो है आने लगी बहुत ज़्यादा, इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग स्मेल। एंड बाहर लॉन के अंदर वो काला काला लिक्विड जो स्लरी है और
डाइजेस्टेड बायोगैस है वो सारी वहाँ पड़ गई। वो देखने में भी इतना बुरा लगता है ना। इट्स लाइक आप लोगों ने देखा होगा कभी जो ये नाली साफ करते हैं एमसीडी वगैरह के वर्कर्स को, जो कई बार ब्लॉक हो जाती है, वो जाते हैं, वो उसमें गंद निकालते हैं, तो इट्स लाइक है स्लज, काले रंग का एक सेमी लिक्विड काइंड ऑफ स्टफ। तो वो देखने में भी बहुत बुरा लगता है और स्मेल भी बुरी थी। फूड सारे डाल दिए गए और इस तरफ भी जैसे बीच में पड़ा है वो, और एक तरफ भी एक ब्लॉक है, दूसरी तरफ ब्लॉक है, लेबोरेटरीज हैं और रूम्स है फैकल्टी का। इधर भी मेरा रूम इस ब्लॉक में है, तो उसकी स्मेल सुबह शाम कंटिन्यूसली आ रही है। पीपल गॉट रियली वर्कड अप कि क्या कर दिया। Unfortunately, I was connected with both the departments. तो मुझसे सुननी पड़ी क्या करा रहे हो। आई वॉज एट दैट टाइम probably the head of rural development center. क्या करा रहे हो, इतनी बदबू आ रही है, इसको हटाओ यहाँ से। एंड माय कोलीग्स इन रूरल डेवलपमेंट, वो बेचारों को भी बदबू तो आ ही रही थी, बट ये सर कि ये जो काला काला पड़ा हुआ है ना, इट्स नॉट स्लज एंड काइंड ऑफ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज ए गोल्ड। वाई कि ये स्लरी है, ये ड्राई हो जाएगी तो इट विल बिकम फर्टिलाइजर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। और आईआईटी में इतनी जगह है, सारे फर्टिलाइजर को इफ यू बाई इट विल कॉस्ट यू सम 20-30,000 रुपीज। इसको ड्राई होने दो, 10-15 दिन में हो जाएगा, एंड देन गिव इट टू नर्सरी। तो दैट वाज देयर। अब हमारे लोग जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, फॉरगेट इट, एंड देयर वाज रियल टसल एंड इट वाज क्वाइट चैलेंज for us to decide, but ultimately I said, यार हटाओ यार इसको, सबको हटा दो। And then we had to pay money to remove it. We had to pay everything. तो बहुत क्वांटिटी में था वो, मतलब काट सी जा सकता था और तो उठाने को तैयार नहीं था, तो we had to pay huge amount of money. Every trip costs us 1,200-1,500 रुपीज। सो जो चीज़ जिसकी कुछ वैल्यू थी उसको वहाँ से हटाने में हमको पैसे देने थे। And obviously it created a lot of, for some time, a kind of, you know, स्ट्रेन कि यार ये लोगों को समझ ही नहीं आती, और वो कहते हैं इनको नहीं समझ में आती। So this is the real incident. Now I would like you to reflect on it and see the perceptions and the Vedana and Sanya of the two groups of kids. Take just two. जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग थे जिनको उससे कोई लेना देना नहीं, और जो रूरल डेवलपमेंट के लोग थे जो उस पर काम कर रहे थे। उनकी परसेप्शंस में, उनकी वेदना में, उनकी संज्ञा में, और उनके कौन से विज्ञान ऑपरेट हो रहे थे, and how they are reflecting on it. It's quite simple exercise, but maybe it will help in some sense. So I hope the incident is clear. So I will subdivide into groups and well, इसी में 3 ग्रुप्स में बांट देता हूँ, तो आप वहाँ चर्चा करके, आई होप इट विल बी पॉसिबल टू come to consensus, and then we'll have a discussion in the main session. हेलो सर। जी सर यहाँ पे आवाज थोड़ा मफल्ड था, बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क, वो अदर डिपार्टमेंट वो बायोगैस को मतलब निकालना क्यों चाहती थी? दैट रीजन, डिड यू मेंशन दैट? वो सूख गया था ना, तो उसमें इट वाज नॉट फंक्शनल। उसके अंदर सामान सारा सूखा हुआ था, तो उससे आप कुछ नहीं कर सकते। उसको साफ करना था, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना था उसको। ओके। तो वो एक टेक्निकल नेसेसिटी थी हमारे लिए। Checking that can distribute people.
तो रूम नंबर 1 में Dhamma Rama, please remember to do the recording. Yes, sir. Okay. Room number 2 में राजेंद्र जी हैं, so kindly do the recording. Room number 3 में निखिल जी हैं, so he'll do the recording. Have the recording rights been assigned? हाँ जी, मैं देख सबको चेक कर लेता हूँ. I'll check up just first before. Dhamma Rama already has it. Then निखिल को भी राइट्स दे देता हूँ और राजेंद्र जी को भी राइट्स दे देता हूँ. ठीक है. So I'll just assign you to different rooms. Good. So let us listen to group number 1. Vaibhav. Hello, sir. Okay. You're able to hear me, sir? हाँ. Yes, sir. So, very briefly, sir, we agreed upon your decision is to remove the slurry was more, the more prominent sangya which was operating was Shrota Sangya. And we disagreed on one thing कि जो ग्रुप 1 था जो उसको निकालना चाहते थे, सो देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट कि कौन सी संज्ञा प्रोमिनेंट थी, गंध संज्ञा या चक्षु संज्ञा. सो इन ब्रीफ दैट वाज द आई वुड से. Okay, and let us see how about other groups. And what about the other group which was not wanting to take it out, which चाहते थे कि पढ़ा रहे थोड़ा 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके उनके बारे में? हाँ, उनके बारे में धम्म संज्ञा इट वाज एग्रीड कि धम्म okay, not agreed, most we say dhamma sangya was most prominent, but of course दीप्ति मैडम pointed out कि it was रूप संज्ञा, कि उन्होंने देख के उनको पता था कि इसका यूटिलिटी है. So as pointed out कि रूप संज्ञा prominent थी, जो मुझे लगा कि yes, that makes more sense. And with respect to चक्षु ये कहा गया, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस था ग्रुप में. चक्षु पे और नासिका पे अनप्लीजेंट वेदना तो अनप्लीजेंट थी, बट क्योंकि जैसे ग्रुप 2 का दीप्ति मैम ने कहा कि ग्रुप 2 का चक्षु रूप संज्ञा ऐसे स्ट्रॉन्ग थी कि उसका यूटिलिटी है, तो गंध का अनप्लीजेंटनेस उतना उनको लगा नहीं, बिकॉज रूप संज्ञा वाज प्रोमिनेंट. So yeah, this is the thing. Okay, let's see group number 2. In our group, we were lucky to have Bhante ji with us, so हमारे काफी concept बड़े साफ अच्छी तरह clear हो गए. और we were in unison with this कि it is the group 1 which had उनके जो predominant तो गंध संज्ञा ही थी, और जिसकी वजह से उनकी जो फीलिंग्स थी वो उसी को डिटरमिन कर रही थी, उनके विचारों को. तो इस वजह से जो धम्म संज्ञा थी वो अनप्लेजेंट थी, और बहुत प्रिडोमिनेंटली अनप्लेजेंट थी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रूरल डिपार्टमेंट ने उन्हें समझाया इसका, क्योंकि रूरल डिपार्टमेंट के लिए भी ये तीनों संज्ञाएं काम कर रही थी, बट जो धम्म संज्ञा उनकी थी, बिकॉज दे न्यू
the usage of that particular thing. So although the Chakshu Sanya and Gandha Sanya would be almost the same, whereas they would be more, it would be more neutral as far as Chakshu Sanya is concerned, as well as understanding the usage. Even the Gandha Sanya would not be as much unpleasant. I mean, I can't say it was not new, it could be neutral, but yeah. But as far as the Dhamma Sanya is concerned, that was predominantly. What are you calling Dhamma Sanya? Actually, may I correct slightly? Please go ahead. Position on Sangya was कि एक group के लिए तो ये nuisance था, which is the Sangya is arising from the fact its nuisance value and ugliness. दूसरे group के लिए it was less of a nuisance and more of a utility item, and therefore because of their prior knowledge and understanding of the usefulness, so that Sangya was कि ये तो useful चीज. So that is primarily the difference that we discussed. So what is the Dhamma Sanya? कौन सा thought है? किस? Thought Is the we are deciding? क्या nuisance है ये? That's a thought. We had decided that Dhamma Sanya will be that which is based only on an idea or a thought, not associated with objects of any kind. Associated with objects will associate with that object. So the thought was basically because this is a gold, you know, that is what they perceive it like that. Actually, Thought Dhamma is is associated. strong. इसमें basically चक्षु संज्ञा और गंध संज्ञा ही आ रही है. Let me understand. The thought has arisen based on an object, Right. okay, which is being seen or heard or smelled. So those we associate with those objects. That's what we decided. You know? We said कि किसी भी object के प्रति जो हमारी utility है, जो उसका meaning है, that we'll say as रूप संज्ञा, not as धम्म संज्ञा. हमने decide किया था कि धम्म संज्ञा means associated with ideas, associated with thoughts, associated with teaching, which cannot be related to any particular object, not to a person directly, or to the book, or to smell or taste, or any of the other. मतलब उसका रूप, शब्द, गंध, रस और पोटब्ब, इन 5 फिजिकल सेंस ऑर्गन से जिससे हम रिलेट नहीं कर पाते, उसको जिससे हम 5 से रिलेट कर पाते हैं, we'll put it in the part of the corresponding object. That's what we decided. And generally that's how the, because संज्ञा का मतलब है कि एक तो है functional, दूसरा है what is my opinion about it. That is also part of that object. So it will be the view that this is useless and this should be thrown out is associated with that particular object. So we'll like to put it as Rupa Sanya. The view that it is a useful thing is also associated with that object which is being seen by eye, and therefore they will put it in Rupa Sanya. Rupa Sanya, okay. And putting it in Dhamma Sanya. Okay. That's the way we classified for sake of our understanding. कल भी मैंने जैसे then किया था ना, so we identified that. Clear. So it will be Rup Sanya predominantly. Then it will become easy for us to understand. Basically, हर तरह का विचार धम्म संज्ञा नहीं बन जाता. मैंने कल भी कहा था कि every thought is not a sanya. Right. Sanya is a thought, but every thought is not a sanya. Thought can be a sankhara also. So group 3 now. जी सर, तो जो अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया वो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग थी. हमारे ग्रुप में जो एक पॉइंट था वो था वेदना के ऊपर. हम लोग वहां पर काफी अलग अलग ओपिनियन रख रहे थे कि किसको कैसी वेदना हुई. जैसे कि जो रूरल डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके लिए एक भीमराव जी ने बोला कि हो सकता है उनको सुखद वेदना हुई, क्योंकि उनको पहले से क्लैरिटी है कि वो तो बदबूदार निकलना ही है, और लेकिन उनको चूंकि ये पता है कि हम इसको सेल करके पैसे कमा सकते हैं एंड थिंग्स आर गोइंग एज एक्सपेक्टेड,
तो उनकी सैया ने इतना उनको कलर कर दिया हो कि उनको सुखद वेदना हुई हो कि इट इज गोइंग एज एक्सपेक्टेड, एंड मैकेनिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको दुखद वेदना ही थी। और वो जो न्यूट्रल है प्रोफेसर जो इन बिटवीन दोनों डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनकी वेदना पर भी चर्चा हुई कि उनको क्या हुआ, उनको दुखद लगी, सुखद लगी या न्यूट्रल लगी। तो वो हम लोग कंफ्यूज थे वहां पर। प्लस ये वेदना पर हम काफी देर चर्चा करते रहे, और हमने ये भी जाना कि वेदना बदल रही है। जैसे मैकेनिकल वालों की वेदना जो इमीडिएट बनी वो दुखद थी, बट द मोमेंट उनको पता चला कि इस स्लरी को बाहर फेंक दिया जाएगा, तो वो कर्ण संज्ञा से उनको, कर्ण विज्ञान से उनको सुखद भी लगेगा कि अच्छा अच्छा, उस वेदना के, उस बदबू के बीच में भी वो मुस्कुरा गए होंगे, उनको सुखद लग गया होगा। तो वही वेदना जो पहले दुखद है वही सुखद हो रही है। और मे भी जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो जब उनको लगा होगा कि ये बदबू को बाहर फेंक रहे हैं, तो गंध विज्ञान तो कह रहा है कि अच्छा हो रहा है, लेकिन उनके धम्म संज्ञा पर फर्क पड़ रहा होगा, और उनको दुखद वेदना भी हो चुकी होगी उस मोमेंट पर। So we were quite convinced about that, about the person who is involved in both department. We were so confused कि उनको न्यूट्रल है, और साथ में हमारा ये भी, मेरा सोचना है कि वो जो पर्सन है जो दोनों डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है, उनका कर्ण विज्ञान भी काफी जागा है, उनको इधर से भी सुनना पड़ रहा है, उधर से भी सुनना पड़ रहा है, एंड नाउ ही हैज टू डिसाइड व्हाट टू डू। And J.K. Sharma ji said कि that person is more inclined towards mechanical, and that's why the slurry was removed. I can't contest it, of course. साहब आपकी पकड़ी गई आपकी बायस, देख लो। Good, thank you. Let me just say what is how I look at it. Part of it is factual, part of it is present understanding, based on the gaps which I have filled on the basis of making it logical. Otherwise, illogical. वहाँ पे illogic भी बहुत चला, but the pressures operate in various ways. तो एक तो चीज तो क्लियर ही है कि जो मैकेनिकल के लोग हैं उनको तो देख के भी और सुन के भी दोनों तरफ से aversion. How can you put a spread a dirt on the floor, on the ground which is supported? जो हमारे बीच है, दो बिल्डिंग से बीच में ग्राउंड है, उसको देख के हरा घास दिखती थी, अभी काला काला गंद दिखता है, तो देखने में भी परेशानी और सूंघने में भी परेशानी. So there was no contradiction in their kind of experiences from both the senses. So they're absolutely clear. So this should be thrown out. So that is the conclusion, very clear. Now the rural development people had obviously smell to pleasant thi nahi, but their perception about the Rupa, its utility was so strong. तो वो बेचारे प्लीड करते रहे कि भाई ये 10-15 दिन रहने दो, कोई बात नहीं, एंड इट विल बिकम वेरी यूजफुल. आपका लॉन भी ठीक हो जाएगा और इस्तेमाल हो जाएगी ये चीज, क्यों वो फेंका जाए इसको. But so they had obviously this was dominant in their mind. So the feelings were not very unpleasant. They were not very unpleasant. But the feeling arising from same thing, listening to their colleagues from other departments, because that when the discussions happen, then you can say anything and everything. So that was quite unpleasant. Yeah, but there was no way out. And with their head being from mechanical, they must have been in real dilemma. Kya kare? And the issue when the discussions come up and then they say classes ho rahi hai, they are getting disturbed, this is happening, that is happening. So for me it was a real dilemma. Kya karna hai yaar iska? Unki baat manegi, inki jiski nahi manoge wo naraz ho jayega. And now you have to really negotiate and see how to take a decision. It was quite a problem for taking a decision. And then ultimately कि भाई सभी लोग जो आसपास से गुजर रहे हैं वो जरूर कमेंट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है नुकसान हो रहा है, we bear the loss and what to do, and allow this situation to become a bit cool down so that people don't really get into it. So I can't really say. There's so much of different pulls and pushes that I mean, in some sense, of course, you can say what was said is probably right. That यार इनको तो समझा ही दूंगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट में उनका हेड हूं तो समझा दूंगा.
ये थोड़े नंबर में कम है, ये तो वहाँ तो 40 लोग हैं, यहाँ तो 5-7-8 लोग हैं, इनको हैंडल करना आसान है, उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है हटा दो यार, जाने दो. So that's how when we caught in a dilemma, decisions become very difficult. And that had to be done in that manner, that happened that way. Now the issue was how the decisions arise from what has a prominent influence on it. You can see एक केस में तो दोनों sensory inputs जो थे वो they were of same kind. In another case, the two sensory inputs are contradictory. But the sanya of utility and its value was more dominant. And in the third case, it had to be really equal work on the both sides, and purely the kind of so-called pragmatic considerations decision was taken. So, and this is what happens in our time. So of course, as a result of that, slowly and slowly, the perception of mechanical people changed. They became involved in that research. Many of my colleagues got involved in the biogas cleaning project, and they were part of the research team subsequently. DT से भी लोग थे, हमारे डिपार्टमेंट से इनफैक्ट 2 लोग थे, वहाँ से भी 2 लोग थे. So the team ultimately comprised 4 people, because the dialogue in this process, which started with a very kind of unpleasant way, because personally the लोगों को जानते ही है ना, वहाँ पे इतने सालों से जान रहे थे, and we knew that they are well-meaning people. So that ultimately resulted in this, that the whole biogas cleaning project, and which has produced a great impact, because it has resulted in bio-CNG, and then it has resulted in plants being set up across the country, and a recognition for the institute, recognition for those people, patent has been obtained. So it's what started as an unpleasant thing eventually produced a very salutary result. And Hamara department ke at least 2 professors got involved directly in that, 2 from there, and then that 4 became a big team. And then even now that program is continuing, even now, which is almost 18 years, 16, 17 years. That program is continuing, and it has become a national program actually of converting biogas into CNG, which can be fused directly in vehicles. So I think that should be enough for the day, unless there are some questions. So that's how we had one sticking point. ये तो ठीक था. This was okay, है ना? So towards the end हमें लगा कि ये तो सही है, a certain opinion है ना, with respect to the utility of that thing, whatever that thing is. So फिर एक सवाल आया कि with respect to संज्ञा क्या कुछ सही हो सकता है? और जब ये सवाल आया तो फिर ये भी आया एक उसके कॉन्टेक्स्ट में कि अब देखो जैसे यूक्रेन वाला है, हम सबको पता है कि ये तो सही है, that the Ukrainians are right or whoever is right. So I would request you to maybe respond to this कि जब मेरे मन में with respect to एक certain संज्ञा ये विचार आता है कि ये तो सही है ना, इसको देखने का क्या तरीका है? Please respond to this, because obviously we all understand, well, apparently we all understand कि वो तो valuable है, it is fertilizer or whatever it is. So that's the context. If the question is clear, Dhasa, please. I think so. See, it is basically because of our one-dimensional approach, not recognizing that different sannyas are having different impact, and that different feelings are there. Nobody can deny that this smell is very bad. And उसमें से smell जो आ रही है, काफी कुछ उसमें मीथेन भी निकलती है, थोड़ी मीथेन भी निकलती है, which is harmful to the environment, and it is not good for health. That is a denial. But second is, it is useful. Now, we can't deny both the things. Now, in any decision-making system, there is a method of decision-making. It's called decision-making with conflicting signals. It's one of the very powerful things we do it every time in our life, but we don't do it consciously. तो अगर हम उसको consciously करें, मान लीजिए 10 factors हैं,
I've just given two only. There are many other factors. In any complex situation, for example, Ukraine, there's an extremely complex situation. There are so many factors. Let me take that example, so that we get into a really complex situation. There is the perception of Russians, there's the perception of Ukrainians, and there's the perception of the Europeans, the NATO, and so many people, differing perceptions. You can't say which is right or which is wrong. The issue is which is important and which is not important. Now, for Ukrainians, something else is important. Their sovereignty is important. Their sense of being a separate nation is important. The feeling that they are victims of aggression is important. For them, these things are very important. For Russians, the importance is this was a part of our country. They've run away from it. And they are doing injustice on the people of Russian origin who is not living in that country, that those border regions, जिसपे Donbass और जो भी है, उनका ये perception है strong, वहाँ के लोगों का भी और Russians का भी, ये हमारे Russians को इन्होंने difference बना दिया और वो उनके ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं, ये उनका perception है, which is an element of truth in it. ये न्यूक्लियर प्लांट्स तो हम लोगों ने सेटअप किए थे as part of Soviet Russia, और अब ये इनके हो गए. It was because of that reason that Ukraine gave away all the nuclear weapons, because they were in their control in that region at the time of separation. So there are different perceptions for them. For America and other NATO, there is a perception कि ये दादागिरी कर रहा है, हमारी दादागिरी पीछे छूट रही है. अब वो उनसे अमेरिकन को कहते हैं कि आपने जाके वहाँ अमेरिका से रह के अफगानिस्तान में बॉम्बिंग कर दी और इराक पे बॉम्बिंग कर दी ऑन सस्पिशन कि वहां पे कुछ है और निकला कुछ नहीं. तो यहाँ तो सस्पिशन नहीं है, रियलिटी है. आप यहाँ पे मिसाइल खड़ी कर रहे हैं, आप हमारी जान ले लोगे. What do you call? There are differing perception, differing factors. Now, under those differing factors, how do we take a decision? So, as engineers, as mechanical engineers, we are taught there's a branch of study called decision making. So, very simple words, it is कि भाई जो factors हैं, 10 factors हैं अगर decision में, उन 10 factors की importance के हिसाब से उसको आप weightage दे दीजिए कि ये factor बहुत important है. जैसे उस केस में यूटिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्मेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस केस में तो इतने सारे फैक्टर्स हैं यूक्रेन और उसमें कि सॉवरेनिटी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कुछ डिसीजन मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट है, या पीस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. वो बेचारी कहाँ गई इस रीजन में. पीस और वर्ल्ड इकोनॉमी, वो भी तो सबका असर हो रहा है, हम सब भुगत रहे हैं ना उसका असर. तो वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. अगर आप देखेंगे तो हर एक डिसीजन में 8-10 पैरामीटर होंगे इस कॉम्प्लेक्स डिसीजन में. Then I'm talking of purely pragmatic view. Then there is a dhammic view, which is different, which I'll share. Pragmatic view में भी decision making में when you have conflicting criteria, then you give certain weightage to them, give certain number to them, and find out the weighted average and see, okay, weighted average in this policy, अगर मैं ये policy follow करता हूँ तो इसमें ये weighted average आती है, इसमें ये करता हूँ तो ये आती है, and then I decide in a purely rational, logical manner, this is the decision which I should take. So here clearly my values, my perceptions will play a very massive role. Perception किस तरह सा, कौन सी चीज important है, utility important है, smell important है, placing important है, या मेरी prestige important है, that can also get involved in the process. और उस केस में तो enormous factors are there. Do I value peace? Do I value sovereignty more? Do I value the fact that others are saying कि मैंने इन Russians को परेशान कर रखा है? Or do I value the fact कि हमारे nuclear weapons ले गए, या हमारे plant है, या वो उनके plant है? Do I value the truth or do I value that it is in my possession? Russians have their own criteria and Americans have their own criteria. हमको अपनी hegemony बना के रखनी है, and therefore they're keeping on, and as people say, some people say, they're using the Ukrainians as cannon fodder. ठीक है, करे जाओ, हम आपको दिए जाएंगे, लगे जाओ. They're not wanting to bring the two together. They don't want to negotiate in any manner. Every party wants to establish its supremacy. The peace is a casualty. कहते रहते हैं peace होनी चाहिए, but on my terms. Everybody says on my terms. Now, obviously, there will be impossibility of arriving at a decision. And ultimately, when complete destruction will take place, then maybe something will arise.
And that's how the problems happen, because we don't take a decision based even on the practical ground. We don't do it. Now, as meditators, what do? And then we go to the other thing. There are some perceptions which are cause of sorrow, suffering. There are some perceptions which are cause of progress in Dhamma. Let me put it only two categories, okay? Because there is a sutta in which so many categories have been done that it's impossible to figure it out. So some lead to deterioration, as they say, anabhagiya sanya, and some lead to progress, vishesha bhagiya sanya. That sounds niveda bhagiya sanya, which lead to penetration in, arhanship. We can keep that aside for the time. तो हम अपने परसेप्शंस को अगर हम देखें कि मेरा ये परसेप्शन मुझे दुख का कारण बन रहा है कि मेरे में लोभ दोष मोह बढ़ा रहा है कि लोभ दोष मोह घटा रहा है, या अलोभ अदोष अमोह बढ़ा रहा है. वेरी सिंपल क्राइटेरिया. Now if I use that and leave aside my personal preferences, personal understanding कि मेरी विजन जो है किसी भी चीज के बारे में is based on certain sense impressions which are not very reliable. So then I make a decision on the basis of Dhamma. This is what I propose to discuss in the evening. कि किस तरह से हमको at a level of within the taking, ये perception मेरे को deterioration की तरफ ले जाएगा कि ये मेरे को excellence की तरफ ले जाएगा. That itself would be, in my opinion, a simple guideline. Of course, जो हमको penetration की तरफ ले जाएंगे वो हम बहुत बार discuss कर चुके हैं. नित्य संन्या, दुक्ख संन्या. Those are things which we already know them. That if we can inculcate them, then it will lead us to transcendence from this world of संसारण का जो संसार है, जो उससे हम बाहर निकल जाएंगे. Now you can see how the progression takes place by reflecting on sanya and consciously working to change it. So we'll discuss it in more detail in the evening. Okay. Is that enough, Bhante? I'm seeing it's 7. Does it make sense? सर दीपक सूर्य जी ने Well, hand raise किया हुआ था. we could talk more about it. The thing is, and maybe हम शाम को कर सकते हैं, because ये कई बार आया है ना कि ये सब तो ठीक है लेकिन ये तो सही है ना. So that's the, yeah, that's what I was trying to point out. so maybe शाम को कर सकते हैं हम. Yeah, कि अगर हम थोड़ा सा, because time है, जो लोग free हैं दिन भर, they can think about it. कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम सही कह रहे हैं, वो मेरे पर्सपेक्टिव से सही है. खासतौर पे कॉम्प्लेक्स है. इस केस में things are not so complex. I mean, they are, but not so complex. I take a specifically simple example. In you take the factual situation of a war or something, there's so many factors. And now it depends on my ability to do Dhamma, which can I see various factors which are important in there. अब अगर मेरी एबिलिटी नहीं है तो मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा. मैं सिंगल डायमेंशन, इसलिए कहा जाता है एकांतवाद एंड अनेकांतवाद. वाद इज अ word of that kind, that you look at a thing from different perspectives or just single perspective, and that makes the difference between openness of mind and fanaticism. So that's the key factor in sannyas, which you must reflect on. Then the decision making becomes even more complex, but then you don't get attached to views. Yahi theek. That's the way we break it. We'll discuss it in the evening more. What I'll request you is कि शाम को maybe one of the things can be done is that यदि मेरे मन में ये विचार उठता है कि ये तो ठीक है लेकिन यही सही है, what do I do when such a vichar arises? Maybe if you can. Yeah, I'll reflect on that during the day and let you. Yeah. If you could give an example, it will be easier for me. आपके ग्रुप में अगर कोई ऐसा बात आई हो तो एग्जांपल बता दीजिए. ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं धर साहब के. अरे ये तो सब ठीक है लेकिन ये तो वास्तव में फर्टिलाइजर है ना, ये तो ठीक ही है ना, फॉर एग्जांपल, है ना. Yeah. And similarly then the Ukrainians are right only, no, yeah, all that's okay, but they are right, this is right. So there were these two specific things.